Hello my dear students and viewers, I welcome you all in my video series on the botany subject। और आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th की बॉटनी में है। हम ब्रायोफाइट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स हमने डिस्कस किए, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स हमने डिस्कस की, और उसके बाद हमने जो क्लासिफिकेशन के बाद देखा कि एनसीईआरटी टेक्स्ट पे जब हम फोकस करते हैं क्लास 11th की तो उसके हिसाब से हमारे पास दो क्लासेस है ब्रायोफाइट्स के। एक हमारे पास है एक क्लास हेपेटोप्सिडा जिसके मेंबर्स को हम लिवरवर्ट्स बोलते हैं। हमने लिवरवर्ट्स की बात ऑलरेडी कर चुके हैं हम। और जो दूसरा क्लास है हमारे पास, उस क्लास का नाम है ब्रायोप्सिडा, और ब्रायोप्सिडा के मेंबर्स को हम जनरली मॉसेस बोलते हैं। तो आप सभी जानते हैं जो ब्रायोफाइट्स जो है ये वो प्लांट्स है, दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में दो फेजेस होते हैं। एक डोमिनेंट फेज होता है, हैप्लॉइड डोमिनेंट फेज होता है, उसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। और एक डिप्लॉइड फेज होता है, उसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। ये स्पोरोफाइट जो है ये पार्शियली और कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफिटिक फेज के ऊपर। तो हम याद रखेंगे, हमें पता है कि ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में हमें दो फेजेस मिलते हैं, एक गैमेटोफिटिक फेज है, एक स्पोरोफिटिक फेज है। तो जहां तक मॉसेस का ताल्लुक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट द डोमिनेंट फेज, इनका भी जो डोमिनेंट फेज है, द डोमिनेंट फेज ऑफ मॉसेस इज गैमेटोफिटिक phase is gametophytic, haploid phase. And remember, this gametophyte of mosses has two stages। जो मॉसेस में गैमेटोफाइट है उसके दो स्टेजेस है। एक स्टेज को हम बोलते हैं प्रोटोनीमा एंड दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं लीफी स्टेज। ये दोनों स्टेज है, याद रखना, ये दोनों स्टेज है गैमेटोफिटिक फेज के। गैमेटोफिटिक फेज अगर आप मॉसेस का देखेंगे आपको दो स्टेज मिलेंगे। एक स्टेज जो है उसको हम प्रोटोनीमा बोलते हैं। अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे वर्ड प्रोटोनीमा, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, नीमा मीन्स थर्ड, फर्स्ट फॉर्म्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सो प्रोटोनीमा इज मल्टीसेलुलर branched filamentous green structure for that develops from the spore। we are having a spore, हमारे पास spore होता है, we are having a spore, हमारे पास एक spore होता है जो स्पोरोफाइट बनाता है, हैप्लॉइड होता है। ये स्पोर जो है ये हैप्लॉइड होता है, ये जर्मिनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल द स्पोर इज लाइक दिस, इट्स ए स्फेरिकल स्मॉल स्ट्रक्चर, दिस हैप्लॉइड स्पोर। इट जर्मिनेट्स, व्हाट इट डज, इट जर्मिनेट्स अंडर सुटेबल कंडीशंस टू फॉर्म ए फिलामेंटस ब्रांचेड thread like structure, to form a filamentous branched thread like structure that is now called as protonema। See, this is protonema, it produces long filamentous thread like structure। spore on germination produces long filamentous thread like structures known as protonema। so remember, प्रोटोनीमा जो है इट इज ए थ्रेड लाइक, प्रोटोनीमा इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक मल्टीसेलुलर ग्रीन एंड filamentous स्ट्रक्चर जो बनता कहां से है, फॉर्म्ड बाय द germination of formed by the germination of haploid spore। हमारे पास स्पोर होता है
This spore under suitable conditions it germinates to produce a thread-like structure. Remember that thread-like structure is multicellular. It is somehow green and it is filamentous and it develops from spore. This is called as protonema. Now we are having in Bryophytes the protonema that emerges, that arises from the spore. स्पोर से जो प्रोटोनीमा बनता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा. तो मैं यहां पे आपको स्ट्रक्चर बताता हूं. ये जो है फॉर एग्जांपल दिस इज प्राइमरी प्रोटोनीमा, दिस इज प्राइमरी प्रोटोनीमा, दिस इज प्राइमरी प्रोटोनीमा. दिस प्राइमरी प्रोटोनीमा हैज फॉर्म्ड एज a result of germination of spore. Now this primary protonema, it produces secondary protonema as well. It produces secondary protonema. For example, this is PP. This is not Punjabilis, but this is primary protonema. This primary protonema produces secondary protonema. Produces secondary protonema. Again, the secondary protonema is similar to that of primary protonema, with a difference that secondary protonema जो है secondary protonema के ऊपर bud like structures होते हैं. It has bud like structures. Suppose this is secondary protonema. This is secondary protonema and this secondary protonema has bud-like structures. It has bud-like structures. And those bud-like structures, they germinate to produce the second stage in the gametophytic phase of mosses. That is the leafy stage. तो हम याद रखेंगे ब्रायोफाइट्स की, मॉसेस की गैमेटोफिटिक फेज में हमारे पास दो स्टेज होते हैं. एक प्रोटोनिमल स्टेज होता है. वो प्रोटोनिमल स्टेज जो है वो स्पोर के जर्मिनेशन के बाद बनता है. स्पोर से जो डायरेक्टली प्रोटोनिमा बनेगा उसको हम प्राइमरी प्रोटोनिमा बोलते हैं. प्राइमरी प्रोटोनिमा के ऊपर बड्स डेवलप, प्राइमरी प्रोटोनिमा के ऊपर, प्राइमरी प्रोटोनिमा से अराइज होता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा. याद रखना, प्राइमरी प्रोटोनिमा डायरेक्टली स्पोर से बनता है. सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्पोर से नहीं बनता है, वो बनता है प्राइमरी प्रोटोनिमा से. याद रखना. और सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो है उसके ऊपर बड्स लगते हैं, उसके ऊपर माइन्यूट शूट्स डेवलप होते हैं जिनको हम बड्स बोलते हैं, जिनको हम रिड्यूस शूट्स डेवलप होते हैं जिनको हम बड्स बोलते हैं. ये बड्स जो है ये जर्मिनेट करते हैं. जब ये बड्स जर्मिनेट करेंगे, ये दूसरा स्टेज जो है उसको हम बोलते हैं लीफी स्टेज. लीफी स्टेज डेवलप करते हैं. शाबाश. तो हमने समझ लिया कि गैमेटोफिटिक फेज में दो स्टेज होते हैं. एक प्रोटोनिमा स्टेज होता है. तो हमें समझ आ गया प्रोटोनिमा स्टेज जो है वो स्पोर से डेवलप होता है. लीफी स्टेज जो है, लीफी स्टेज is developed from the protonimal stage. From the protonimal stage. लीफी स्टेज जो है ये प्रोटोनिमल स्टेज से बनता है, प्रोटोनिमा से बनता है. शाबाश. कैसे? द सेकेंडरी प्रोटोनिमा शाबाश बियर्स बर्ड्स. सेकेंडरी प्रोटोनिमा के ऊपर बर्ड्स लगेंगे एंड दीज बर्ड्स स्प्राउट. ये बर्ड्स स्प्राउट हो जाएंगे एंड प्रोड्यूस leafy stage of which phase? Of gametophytic phase. Of very good mosses. Mosses का ये लीफी स्टेज बनाएंगे. ठीक है ना. तो ये लीफी स्टेज हमें कैसे दिखेगा? फिर से मैं दोहराता हूं. लीफी स्टेज जो है, लीफी स्टेज is developed from protonimal stage. ये प्रोटोनिमल स्टेज से डेवलप होता है. द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा से बनता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा के ऊपर बर्ड्स लगते हैं. ये बर्ड्स जो है स्प्राउट हो जाते हैं और बनाते हैं लीफी स्टेज ऑफ गैमेटोफिटिक फेज ऑफ मॉसेस. याद रखना. ये कैसे, मैं आपको यहां पे डायग्रामेटिकली शो करूंगा. फॉर एग्जाम्पल
this is protonema. This is secondary protonema. This secondary protonema bears buds. This is bud. This is bud. This is bud. This is bud. It bears a number of buds, not a single bud. A number of buds. All these are buds. All these are buds. What is this? This is secondary protonema. This is secondary protonema. Protonema. This is secondary protonema. ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहां से आया? प्राइमरी प्रोटोनीमा से. प्राइमरी प्रोटोनीमा कहां से आया? वेरी गुड. प्राइमरी प्रोटोनीमा स्पोर से डेवलप हो गया. जब स्पोर जर्मिनेट हो गया, प्राइमरी प्रोटोनीमा बन गया. प्राइमरी प्रोटोनीमा के ऊपर बन गया सेकेंडरी प्रोटोनीमा. सेकेंडरी प्रोटोनीमा के ऊपर अब बर्ड्स लग गए. नाउ दीज बर्ड्स दे विल जर्मिनेट. दे विल प्रोड्यूस ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल एक्सिस, सिस्टम लाइक एक्सिस, on which sessile leaves develop, and those sessile leaves, they are arranged spirally. This is one bud. From this bud a plant develops. This is another bud. Another plant develops from it. Another leafy shoot develops from it. This leafy shoot has a cylindrical stem like axis on which sessile leaves, remember, on which sessile leaves are arranged spirally. On which sessile leaves are arranged spirally. Similarly, from this bud also an axis-like structure develops, and stem-like axis develops on which sessile leaves are arranged spirally. इसके ऊपर भी sessile leaves spirally arrange होते हैं. शाबाश. याद रखना, मैंने आपको बताया लिवरवर्ट्स में, हेपेटकॉप्सीडा के मेंबर्स में भी कुछ मेंबर्स वहां पे भी लीफी है. मैंने आपको ऑर्डर जर्मिनेल्स का डिस्क्रिप्शन दिया था. वहां पे भी सेसाइल लीव्स लगते हैं, लेकिन वो लीव्स जो है दे आर अरेंज्ड आइदर इन 2 और 3 रोज. 2 या 3 रोज में वो अरेंज होते हैं. लेकिन मॉसिस की जो खास बात है, उनमें भी सेसाइल लीव्स होते हैं, बट दोज सेसाइल लीव्स दे आर अरेंज्ड स्पाइरली. दे आर अरेंज्ड स्पाइरली ऑन दिस स्टेम लाइक एक्सिस. So this is another plant. Similarly, from rest of the buds, the plants will develop, and this on the lower side, the plant will bear, what is called as hair-like structures. Those hair-like structures are called as, very good, they are called as rhizoids. They are called as rhizoids. These are rhizoids. See, these are rhizoids. These are rhizoids, and these are rhizoids. And I told you कि जो लिवरवर्ट्स के जो राइजोइड्स है वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन और वो नॉन ब्रांचड अनब्रांच्ड होते हैं, उनमें ब्रांचिंग नहीं होती है. याद रखना, लिवरवर्ट्स के जो राइजोइड्स है वो यूनिसेलुलर होते हैं और अनब्रांचड होते हैं. जहां तक मॉसिस का ताल्लुक है, इनके जो राइजोइड्स है वो मल्टीसेलुलर होते हैं और ब्रांचड होते हैं. याद रखना, ये जो है दीज आर राइजोइड्स. दीज आर राइजोइड्स. ये राइजोइड्स है. Rhizoids are root-like structures. Very good. These are not roots, but these are root-like structures. Root-like structures कहाँ पे present होते हैं? Present in very good bryophytes. Present in mosses as well. But these rhizoids, remember, they are multicellular. MC is multicellular, and they are branched. Very good. The rhizoids, so you remember, the rhizoids of mosses are multicellular. They are multicellular. They are made up of many cells, and simultaneously they are branched. See, this is the main axis from which a number of lateral branches arise. These are branchings, and that's why the rhizoids are branched. Shabash. So the leafy shoot, I will write here, rhizoids जो है, rhizoids are multicellular and branched. किन के अंदर? In mosses. Very good. Mosses. Very good. Mosses के अंदर जो rhizoids है वो multicellular है और branched है. शाबाश. एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, द लीफी स्टेज वेरी गुड, बियर्स स्टेम लाइक एक्सिस
on which sessile leaves. What are sessile leaves? Leaves without petiole. Leaves without petiole. On which sessile leaves are arranged superiorly. Very good. Very important point. The leaves in mosses, the sessile leaves in the mosses are arranged superiorly on a stem-like axis. And the most important point is that जहां पे भी आप मॉसेस देखोगे, एक मॉस आपको आप अकेले अलग अलग एक मॉस नहीं देखेंगे, या आप दूर दूर ये मॉसेस नहीं होंगे, एक ही जगह पे आपको काफी सारे मॉसेस दिखेंगे. उसका रीजन ये है कि जो सेकेंडरी प्रोटोनियमा है इसके ऊपर एक बड नहीं होते, काफी सारे बर्ड्स होते हैं. हर कोई बर्ड जो स्प्राउट करेगा एक प्लांट बनाएगा. तो एक सेकेंडरी प्रोटोनियमा के ऊपर जब काफी सारे बर्ड्स होंगे, एक ही जगह पे होगा, वहां से काफी सारे प्लांट्स डेवलप होंगे. तो ये जो मॉसेस है दे ऑलवेज ग्रो इन पैचेस, एंड दिस हैबिट ऑफ ग्रोइंग इन पैचेस, this is called as gregarious growth. This is called as gregarious habitat, or this is also called as gregarious growth. I will write here, mosses जो है, mosses grow in patches. It means that you will find a number of plants of mosses at a single place. एक ही जगह पे आपको काफी सारे मॉस के प्लांट्स मिलेंगे. शाबाश. एंड this habit of mosses this habit of mosses is known as gregarious. Remember the word. This is called as gregarious habit. This is called as gregarious habit, or this is called also called as gregarious growth. Gregarious growth. Mosses show gregarious growth. It means that a number of mosses grow at a single place together in patches. This is called as gregarious growth, or this habit of mosses that they grow in patches. This is called as gregarious habit. So मैंने आपको बताया, यहां तक मैंने आपको बताया कि हमारे पास था बेसिकली सुपोर. we were having a सुपोर. हमारे पास था सुपोर, और ये सुपोर जो है ये हैप्लॉइड था, क्योंकि ये मियोसिस के कारण बनता है, हम जानते हैं. शाबाश. ये जर्मिनेट हो गया. हमारे पास बन गया प्राइमरी प्रोटोनिमा. प्राइमरी प्रोटोनिमा के ऊपर डेवलप हो गया सेकेंडरी प्रोटोनिमा. सेकेंडरी प्रोटोनिमा से के ऊपर बर्ड्स लग गए, बर्ड्स डेवलप हो गए. बर्ड से बन गया लीफी स्टेज. यहां तक मैंने आपको बताया. जो लीफी स्टेज था, एपेक्स पे, ऑन द एपेक्स ऑफ दिस लीफी स्टेज आर प्रोड्यूस्ड द सेक्स ऑर्गन्स. एपेक्स के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे. हमें पता है दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स हैं. एक मेल सेक्स ऑर्गन है, दूसरा फीमेल सेक्स ऑर्गन है. मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडिया. वेरी गुड. मेल सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एंथ्रीडिया, while as female sex organs are called as, very good, archegonia. Very good. They are called as archegonia. Spore is haploid, primary protonema is haploid, secondary protonema is haploid, leafy stage is haploid, because both protonema and leafy stage, they are the part of the gametophytic phase, and sex organs are haploid. Male sex organ, the antheridia, is haploid, and female sex organ, the archegonia, is also haploid. Very good. Shabash. The sex organs are produced, कहां पे बनते हैं? Produced at the apex of leafy
stage. I told you earlier, the sex organs are multicellular and they are jacketed. The male sex organ is called as antheridia and the female sex organ is called as archegonia. Remember, the sex organs are produced at the apex of the leafy stage. Remember, sex organs are not produced on the protolemur stage, but the sex organs are produced on the leafy stage. Remember this point. So, spore on germination gave rise to primary protonema. Primary protonema developed into secondary. It developed secondary protonema. Secondary protonema bears buds. Those buds sprout to produce a leafy stage. At the apex bear sex organs. Sex organs are and female sex organs. Male sex organ is called as antheridia and female sex organ is called as archegonia. Shabash. Now we are having sex organs. The sex organs produce gametes, respective gametes, that is, male sex organ will produce male gamete. Remember, this male gamete is biflagellate as that of the gametes of liverworts, and we are having female sex organ FSO. It will produce female gamete. It is non-flagellate. Shabash. Water is again necessary for the process of fertilization. The fertilization of male and female gametes leads to the formation of zygote. Leads to the formation of zygote banega. Shabash. And again, as I told you in the previous classes as well, in liverworts or in general characteristics of bryophytes, ये जो zygote है, it will not be released. It will be retained on the female sex organ. In fact, it will be retained inside the venter of female sex organ. We know that venter is the basal swollen part of the female sex organ in case of bryophytes. Very good. तो zygote जो है मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा. Zygote is diploid structure, 2N structure, because it is formed by the fusion of male sex organ, male gamete, that is haploid, and female gamete, that is also haploid. So zygote is diploid structure, is retained inside the venter of archegonia. की वेंटर में ये रहेगा and undergoes mitotic divisions to form Shabash second phase in the life cycle of mosses, that is Sporophyte. Very good. Sporophyte. So we are having two phases in bryophytes. One is gametophytic phase, the dominant phase, and this dominant phase after fertilization of gametes is followed by the formation of a diploid phase, that is sporophytic and short-lived phase. Very good. This is sporophyte. This sporophyte is elaborated. It's a complex structure as compared to the sporophyte of liverworts. Each sporophyte, or I will write here, the sporophyte of mosses is much elaborated and complex as compared to the sporophyte of liverworts. The sporophyte in case of liverworts was a simple structure having a foot, a seta and a capsule, but in case of mosses the sporophyte is
a bit complex. It also has all those regions. It has a foot same as that of liverworts. It has seta same that as the sporophyte of liverworts, and it has capsule, but this capsule is somewhat complex. It has three distinct regions. It has what is called as topmost lid, that is called as operculum. It has operculum. It has basal region, that is called as apophysis. Apophysis, and it has a central region. That central region is called as theca, and this theca bears spore sacs, the structures inside which spores are produced. So sporophyte is a complex structure. The capsule in fact is a complex structure in case of the sporophyte of mosses. कैप्सूल थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पे हमने देखा लिवरवर्ट्स में सिंपल स्पोरोफाइट होता है, एक फूट होता है, एक सीटा होता है और एक कैप्सूल होता है. कैप्सूल के अंदर सिंपल स्पोरोजिनस मदर सेल्स होते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं. लेकिन यहाँ पे आप अगर देखेंगे मॉसिस में, अगर आप देखेंगे इनका जो कैप्सूल है वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि टॉप पे है एक लिड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज अपर्क्यूलम. Then there is the body of capsule. The body of the capsule is called as theca, and then there is basal region. Basal, somehow it is photosynthetic. It has stomata. It is green in color. It carries out the process of photosynthesis. This is called as apophysis. I will show you diagrammatically here the structure of sporophyte of what is called as mosses. See here. This is operculum. This is operculum. This is operculum. This is operculum. The lid of what is called as sporophyte, and this whole portion is theca. This whole portion is theca. It has a central conducting strand. Sterile, it is sterile. This is conducting strand. It is sometimes also called as columella. This is also called as columella. And these are spore sacs. This and this, ये दो जो है, these are spore sacs. Spore sacs inside which spores are produced. This is central conducting strand. On its right side and on its left side are present spore sacs. And remember, then we are having the basal, green and photosynthetic region that somehow bears stomata. ये stomata है इसके ऊपर, and this region is called as apophysis. This is called as apophysis, and this portion, this is seta portion, and this is foot. This is the foot portion of the sporophyte. This is the seta portion, and this whole portion just above the seta is apophysis part of the capsule. This is apophysis part of the capsule. The basal part of the capsule is called as apophysis. The terminal part of the capsule is called as operculum. On this operculum are present what are called as teeth-like structures. Those teeth-like structures are called as peristome teeth. Remember, they are very important. They are arranged in two rows.
They are arranged in 2 rows and their number also varies from species to species. See here, I told you, मैंने आपको बताया कि जो सुपोरोफाइट है मॉसिस का वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू द सुपोरोफाइट ऑफ लिवरवर्ट्स. लिवरवर्ट्स में क्या था, सुपोरोफाइट में तीन रीजन थे, 3 सिंपल रीजन्स थे. एक फूट था, एक सीटा था, एक कैप्सूल था. कैप्सूल सिंपल स्ट्रक्चर था, कैप्सूल में कोई स्ट्राइल टिश्यू नहीं था. लेकिन जब हम ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट से लेके मॉसिस तक जाते हैं, देयर इज प्रोग्रेसिव स्टेरलाइजेशन ऑफ सुपोरोजिनस टिश्यू. The cells that are destined, that are designed to form spores, they get sterilized. वो sterilized कैसे होते हैं? Because they form a number of other structures that are necessary, for the dispersal or that help in the dispersal of spores. तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे, मैंने आपको बताया 3 सिंपल रीजन्स थे स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवर्ट्स के अंदर. लेकिन मॉसिस में भी जो स्पोरोफाइट है उसका भी फुट है लिवरवर्ट्स की तरह, उसका भी सीट है लिवरवर्ट्स की तरह, उसका भी कैप्सूल है लिवरवर्ट्स की तरह. लेकिन कैप्सूल में 3 अलग अलग हिस्से हैं. द बेसर रीजन ऑफ द कैप्सूल इज called as apophysis. This apophysis bears stomata-like structures. So when it bears stomata-like structures, this apophysis is also chlorophyllous. It has green chlorophyll pigment. So this apophysis part of the sporophyte is photosynthetic. So the capsule, remember, the capsule of mosses is not completely dependent upon the gametophyte. It is partially. Remember, the sporophyte of mosses is partially dependent upon the gametophyte. Partially dependent because it is able to produce some of its food material itself, because the capsule part, the apophysis of the capsule bears photosynthetic pigments, and this apophysis carries out the process of photosynthesis. During process of photosynthesis, it produces some of the food material that is consumed by this capsule, that is utilized by this capsule for its growth and development. And for some of the food materials, this sporophyte is dependent upon the gametophyte. That is why it is not completely dependent on the gametophyte, but it is partially dependent upon the gametophyte. Beyond this apophysis, there is the body of the capsule. The body of the capsule is called as theca. This theca has a central separating strand. This theca has a central conducting strand. That conducting strand is also called as columella. On both sides, this is the central conducting strand. On its right side and on its left side are produced spore sacs. इन spore sacs के अंदर क्या है? Sporogenous cells है. वो sporogenous cells diploid है, वो meiosis करेंगे और उसके अंदर क्या बनेंगे? spores. ये जो मैंने छोटे छोटे सर्कल यहाँ पे दिखाए, ये जो है, they are spores inside the spore sacs. Very good. And at the top is a cap-like structure. That cap-like structure is called as operculum. This is called as operculum. And on this at the rim of this operculum are present peristom teeth. These peristom teeth, they are very important. They are very important because they help in the dispersal of spores. ये पेरिस्टोम टीथ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने देखा लिवरवर्ट्स के अंदर, वहां पे क्या था कि विंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास स्पेशल डिवाइसेस है जो हमें मदद करते हैं डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स में. उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टोम टीथ. तो फिलहाल आपने इतना समझ लिया कि जो स्पोरोफाइट है मॉसिस का, इट इज एन एलॉबरेटेड एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवर्ट्स. कॉम्प्लेक्स कौन सा हिस्सा है? फूट है, सीटा है कि कैप्सूल है? कैप्सूल में कितने रीजन्स है? स्पोरोफाइट कैप्सूल में कितने रीजन्स है? मॉसिस के अंदर 3 रीजन्स है. Apophysis is green photosynthetic region. It is basal region. The body of the capsule is called as
Theca has spore sacs. Inside spore sacs are present spore mother cells. Those spore mother cells undergo meiosis to produce what is called as spores. And the lid of the capsule is called as operculum. On this operculum are present peristom teeth. These are teeth-like structures that help in the dispersal of spores, जो spores की dispersal में मदद करते हैं. कैसे मदद करते हैं मैं आपको बताता हूं. ये पेरिस्टोम टीथ जो है, they are arranged in two rows. They are arranged in two rows. मैं यहाँ पे एक important point आपको बताऊंगा. 2 rows में ये पेरिस्टोम टीथ है, अरेंज होते हैं. पेरिस्टोम teeth are very important structures. Very important structures and help in dispersal of spores and help in dispersal of spores. The number of these peristom teeth varies from species to species. For example, if we talk about Funaria, a moss, we are having 16 peristom teeth in total, and they are in 2 rows, 8 plus 8. They are not 16, but they are 32 in number, and they are arranged in 2 rows, 16 plus 16. Remember, in case of polytrichum, very very important point from entrance point of view, we are having 64 peristom teeth. They are arranged in 2 rows. एक रो में कितने होंगे? Very good, 32 plus 32. And the most important point is that in case of sphagnum, मैंने sphagnum की पहले भी बात की है. क्या बोलते हैं इसको? कॉर्ड मॉस या बॉग मॉस इसको बोलते हैं, या इसको पीट मॉस भी बोलते हैं. sphagnum के अंदर no peristom teeth. Very good, very important point. No peristom teeth. पेरिस्टोम टीथ इसके अंदर नहीं होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया. पेरिस्टोम टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स एंड हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स. मैंने भी नहीं बताया कैसे डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स में मदद करते हैं, लेकिन मैंने इतना बताया कि जो पेरिस्टोम टीथ होते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होते हैं. इनका जो योगदान है वो है डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स में, ये बड़ा मदद करते हैं. The number of spores, the number of these peristom teeth, they vary from one species of mosses to another species of mosses. But remember, they are always arranged in 2 rows. In case of Funaria, the total number of peristom teeth is 32. They are arranged in 2 rows of 16 each. 16 plus 16. In case of Polytrichum, the number is twice that of the Funaria, that is 64. And they are again arranged in 2 rows, 32 plus 32. Similarly, in case of Sphagnum, no peristom teeth is present. And these टेक्स्ट में क्या लिखा है? वहां लिखा है मॉसेस जो है, मॉसेस हैव एन एलॉबरेटेड मैकेनिज्म. मॉसेस हैव एन एलॉबरेटेड मैकेनिज्म ऑफ spore dispersal. Mosses have an elaborated mechanism of spore dispersal. What is this elaborated mechanism? Elaborated mechanism is that the peristom teeth, which I told you that they are responsible for dispersal of spores, these peristom teeth, remember, these peristom teeth are hygroscopic. These peristom teeth are hygroscopic. What are hygroscopic substances? What does you mean by hygroscopic? Hygroscopic means they absorb moisture. पेरिस्टोम टीथ जो है, जो इस ओपर्क्यूलम के ऊपर है, they absorb moisture. They are hygroscopic and thus absorb moisture. Thus absorb moisture. Moisture कहां से absorb करेंगे? From environment. Very good. From their surroundings, from their environment. शाबाश. जब ये moisture absorb करेंगे, इनमें क्या डेवलप होगा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से? शाबाश. दे डेवलप ए प्रेशर, एक प्रेशर डेवलप होगा.
शाबाश, that results into breakdown of उससे क्या होगा, कैप्सूल, शाबाश, एंड रिलीज ऑफ क्या होगा, वेरी गुड, सुपोर्स। वो सुपोर्स कहां पे है, सुपोर सैक के अंदर। तो याद रखिएगा, जो पेरिस्टोम टीथ है उनका रोल है डिस्पर्सल ऑफ सुपोर्स में। ये 2 रोज में होते हैं। मैं आपको बताता हूं, आउटर रो में जो पेरिस्टोम टीथ होते हैं वो हाइग्रास्कोपिक होते हैं। हाइग्रास्कोपिक का मतलब होता है दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरमेंट, फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। वंस दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, they develop a pressure. As a result of development of that pressure, the capsule is broken down and the spores are released. Inner peristomes teeth जो है, they act as sieves and they also help in the release of spores during their dispersal. They also help in release of spores from spore sacs during their dispersal. And this is an elaborated mechanism of spore dispersal in case of mosses. And the most common mosses आपके टेक्स्ट में डायग्राम्स भी दिए हुए हैं। The most common mosses are, remember, we are having funaria. Remember, we are having what is called as polytrichum. And we are having what is called as sphagnum. Very good. We are having sphagnum. This is all about mosses. So I hope that you have understood the basic and fundamental points about mosses. तो इसके साथ ही हमने ब्रायोफाइट्स का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी यूट्यूब चैनल जो है वो शकूर बॉटनी के नाम से है। आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, जो भी नए वीडियोस जो आएंगे, जो मैं अपलोड करूंगा, उनकी जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी और आप उनको आराम से इन टाइम आप उनको देख पाएंगे, उनसे आप अपना फायदा उठा सकते हैं। For any suggestion, you can, for any suggestion or query, you can, ask questions, or you can directly send me questions on my WhatsApp number. That is 788. That's 7889656 I hope आपको मेरे लेक्चर से फायदा होता होगा। कितना फायदा होता होगा ये भी आप मुझे फीडबैक में बताएंगे। कहाँ पे आपको लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट्स करने की जरूरत है, तो वहां पे हम डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। तो अल्लाह हाफिज।